Sound check. Sound check. Sound check. थोड़ा सा गिटार बढ़ा दो ना सर. Sound check. Sound check. इतना ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा कम. Slight reduction sir please. यहीं पे गाना लिख दो. On the spot. Sound check. A slight guitar reduction, like maybe 4 dBs, 3 dBs. Guitar. Like reduction in volume. गहरा ये घाव है जो दूर हो तुम, वक्त भी नाराज है जो दूर हो तुम. Just 2 dBs guitar if you can increase. Can you give slight more reverb on my vocals? Her. Thank you for having me. How do I? धन्यवाद गरु. Or if there is slight error in the pronunciation, so please forgive. Amazing. So I'll just start. This is like a song that I wrote. Abhi, I have written the full song, but I'll sing just the first minute of it. It's called Teri Or. मेरा नाम है जोस्त. हर शाम को मैं तन्हाई से मिल के आता हूँ सूनी राहों में. I want you to clap with me when like on rhythm. हर शाम, no, it's not tuck नहीं. हर शाम को मैं half beat rhythm. And my pick has gone in the guitar, no worries. हर शाम को मैं तन्हाई से मिल के आता हूँ सूनी राहों में कभी गुलाब उगाता हूँ. राहें काली हो गई है मंजिल है सफेद, जेबें यादें भर रही है जेबों में है छेद. तुमसे मिलता हूँ तो खुद से मिल के आता हूँ, खुद से बातें करके फिर खफा हो जाता हूँ. मन मेरा क्यों चल रहा ये राहों से है तेज, जेबें यादें भर रही है जेबों में है छेद. मैं चल रहा हूँ तेरी ओर, तेरी ओर. I want you to sing this line with me. It goes like कि मैं अनंत काल तक चलते रहता है मैं. It goes on till eternity. क्योंकि मैं अनंत मतलब चलो no decoding of the song, but मैं चल रहा हूँ तेरी ओर. So you have to sing with me कि मैं चल रहा हूँ तेरी ओर, तेरी ओर. Can you sing it with me? बोलो हाँ. Okay, let's do it. जोर से आवाज आनी चाहिए. मैं चल रहा, आवाज नहीं आ रही, फिर से 1 2 3 4. मैं चल रहा हूँ तेरी ओर, तेरी ओर. Thank you. That is Joost. Thank you. I'm walking towards you guys in Bengaluru right now.
Sorry? No, I was trying to crack a joke, but it didn't land. Oh, I was going to crack a joke about इस सुबह आया हमारे यहाँ एक चोर. Okay, sure. But like I realized that was very lame. No, I think lame things always work in the world. So there is no problem in. I, We can be lame together. yeah, we can be. I think personally speaking, well, for me, just as like the flow of the conversation seems to be organic. So everything, I don't like the categorization or lame and things like that because especially in places like these and artists and intellectuals, they try to be very conscious about their taste and things like that. I'm like, थोड़ा यार, relax. मतलब, like life should be fun, right? Absolutely. Yeah. So. Yeah. yeah. And I think I sense that from your songwriting also. Like you are not confined by, sort of a particular genre or a particular sort of sound. I mean, it seems to be very organic, your music and your songwriting comes from some feeling, image. How does it begin? What is the process? Thank you for your kind words. I think uh, for the songwriting, personally for me, I never intend to make a particular kind of sound or a particular kind of song because I don't understand genres in the first place. Like, I myself don't know what a genre is. I mean, I know what a genre is, like this is a particular kind of sound, but I don't see myself in a particular foundation. Yes, that's So- very obvious and very refreshing. Thank you. Because I think it comes from a place that I started music without knowing anything about music. Like my desire to express music came from this innate fire or this innate expression within me that wanted to get like a release through music. So I am not really in my head also I'm not bounded by the laws of music in the sense that there's a certain traditional approach to music that you have to find or you have to figure out a flow with a certain melodic thing or a certain compositional style or a certain raga, but I don't see myself restricted by any of those rules because when I started, I didn't know the rules. But over the years, I have kind of figured out the rules because I want to be really good at what I do. But but I don't necessarily feel bounded by any of the rules. So tell us a little about that journey. Like, how did it start, the whole musical journey? What do you want to Just know? start from like एकदम बचपन से मैं गुनगुनाता मैं था. बचपन में पैदा हुआ था नर्स ने बोला कितना सुंदर बच्चा पैदा हुआ मैंने बोला थैंक यू आफ्टर दैट इट वाज अ स्मूथ राइड so I think everything comes from your childhood, right? So मैं जब how many of us out here understand Hindi? I think you can mix. I mean, yeah. We can, right? Yeah, तो yeah, मैं absolutely. मतलब फिर तो मैं बीच में हिंदी भी बोल सकता हूँ ना हाँ, मेरा बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल। हिंदी में वो है we मतलब can आ keep- निकलते हैं हिंदी में एक there's a certain flow in Hindi तो जब मैं पैदा हुआ ना तो uh, I remember when I was 3 years old, like this is a very monumental change that happened in my life. I remember I was 3 years old. I hated the school that I used to go in. वो पड़ोस में एक स्कूल था अब नाम डीएवी स्कूल सॉरी डीएवी लेकिन मैं बोल रहा हूँ वो दैट पर्टिकुलर ब्रांच द टीचर वो वेरी रूड टू मी शी इन दिल्ली वो पता नहीं मैं पैदा हुआ था यार I know. मैं पैदा हुआ था वो बोल रही है ऐसे क्यों लिख रहे हो वो क्यों लिख रहे हो मैं बोल रहा हूँ मैं तो अभी बोलना भी नहीं सीखा मेरे को क्यों डांट लगा रहे हो यार इन माय सबकॉन्शियस माइंड तो आई वाज रियली सैड एंड आई डिडंट वांट टू गो टू दैट स्कूल तो मैं जब जाता था तो रोज सुबह रिक्शा आता था 1 किलोमीटर दूर था वो स्कूल एंड वन फाइन मॉर्निंग आई वोक अप और मैं आई वाज रेडी मैं 3 years old आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि मेरे को ये स्कूल नहीं जाना तो वो बोलते कि नॉर्मली in an Indian household, maybe everywhere, parents would try to like force you or to, you know, प्यार से बोल दो नहीं नहीं आज चले जाओ कोई नहीं बेटा my parents my dad told me कि okay what do you want to do I told him कि मेरे को ना अपने cousin के स्कूल जाना है तो I got admitted to that school
So that now when I look back, that is like the very monumental. For the come. No, 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 no. Let it come. Can you do one thing? हजी क्या हाल है हजी क्या हाल है बोलो 1 2 3 4 बढ़िया 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 क्या हाल है आपका साउंड को और भी आप इसको बढ़िया ठीक है ये भी सुनिए Uh, yeah, so where was I? I forgot. So, so yeah, school, what happened was that uh, that moment gave me a big realization that this is my life and everything that I do in this life is my responsibility. If I fail, I fail. If I succeed, I succeed. But there is nobody that is defining anything that I have to do in this life. And I was 3 years old. Obviously, I didn't think of it that much that time. But now when I look back, I think it planted that seed in my head like very strongly. And all my life, I followed by that rule that wherever everything that I do in this life is coming from a space of complete ownership. And that has Right. just dictated my life. And music is a subset of that feeling. Right. So the reason why I've told you that story is because I can tell you that this is how I started music and this and that, but it starts from there. It Yeah. starts from this complete ownership of my Yeah. life. Yeah. And how did the music start? How did the music start? So I always used to write like a lot of poetry when I was a little kid. मेरी मतलब अखबारों में छप जाती थी poems, जो Times of India, Hindustan Times, or when I was in school. So I was in a normal middle class school, and that became like big thing in वो स्कूल में आपकी हिंदुस्तान टाइम्स में छप जाती है ना अगर दिल्ली के उसमें स्कूलों में अरे इसकी पोएम छप गई यार अरे देखो यार तो दैट वाज लाइक अ बिग रिकग्निशन एंड like I was always fond of words. Then I was always chasing like a creative outlet to because there's a lot of things within me that want to get expressed, and I have realized this ever since I was a little kid. Like even if I date back to when I was 6 years old, 7 years old, there are things within me कि मेरे को ये कहनी है, मेरे को ये express करनी है अपने आप को, और वो over the period of time. I became a CA. Then I went to Mumbai to assist in movies and make a couple of like short films, etc. I assisted on a Bollywood film. I won a few awards directing like my short film. But then I took a complete year off to just work on myself, and I did like a lot of meditation, did like a lot of self work, did like a lot of introspection. And one fine night, magically, मैं रात के 2 बजे उठा और वो एलिस इन वंडरलैंड वाली स्टोरी है. मैंने बोला अरे ये क्या हो गया. And I just knew in my heart that I was meant to create music in this world, and there was no logical explanation to it. It just flowed. That thought was like a state of magic that flowed. जैसे कोई फवारा फटता है ना, फिर कोई रेनबो आता है. It just was there, and it was very real. And I had no other option but to follow that voice within me, and I followed it, and I have been very truthful to that voice because I also had a strong feeling there is a particular kind of music that I want to do, and it's going to take me a long time before I put that music out because I want to be really good at what I do. I want to be exceptionally good. I want to like change the cultural landscape of the country. I am very conscious about that. So, so that feeling was very strong within my heart, and over the period of time, because I want to be better at the craft aspect of it, so I've spent many years improving my craft and things like that, and that has been the journey of music pretty much. So that is when the Just persona also emerged. I mean, I know that you don't
talk about, I mean, nobody knows your non-musical name, so to speak. So was that also like, that night, was that the night that Just was उस born? रात मेरे घर आया एक Just? मेरे घर आया एक जुस्त. But yeah, that is the truth, because the decision of doing music and the fact that my name is Just, both of them flowed together. And Just is not like an intellectual name that I gave to myself. Oh, Just का मतलब ये है, it sounds like this. There was no intellectual. Process to it. It just came organically. The only intellectual process in my head was how should I spell it. That was it. But the name, it just came, it just flowed, and I had that moment was for me was so real. It was more real probably than the moment that we are having right now. So it was so real that I had no option to take it to heart and follow it. Right. Let's talk a little bit about Chor, because that is when you sort of, burst onto our timelines, burst onto our consciousness. Suddenly the song was everywhere. It's still so popular. Right. How did that song begin? Was it with an image, a feeling, a sort of sense of something? I'll tell you how, I'll tell you a little bit about my creative process. तो मेरा creative process ये है कि I'm always looking for magic. I'm not interested in doing anything. मेरे को क्या करना है? मेरे को गाने थोड़े सुनाने हैं इधर. मतलब I think there are a billion songs and thousands of songs released every day. इतनी marketing, इतना सब कुछ मेरे को, and now AI, you can create exceptional music through some of the website. I have zero interest in making any songs. Honestly. क्योंकि मेरे को लगता है मैं ये जो like just to go a little philosophical, मेरे को लगता है ये जो जन्म है, ये जो बॉडी है, मैं इधर 1000 बार आ चुका हूँ. इस बार ही आके भी मैं टाइम पास करके चला गया तो मेरे लिए कोई मजा नहीं है. तो मेरे लिए कोई मोटिवेशन नहीं है टू डू एनीथिंग. लाइक देयर इज जीरो मोटिवेशन फॉर मी टू मेक म्यूजिक, फॉर टू डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड और टू वर्क. But if there is magic, then I'll go to every extent to chase that magic, because magic is the only tangible thing or intangible thing that excites me. और वो magic जो है वो सिर्फ मैं ही experience कर रहा हूँ कि that is my connection to it. तो मेरे लिए, और वो magic मैंने realize किया, it happens in a state of flow. It happens when it wants to flow through you. You can't dictate that. So Chor was also one of those moments that the melody flowed. And the concept flowed, and it just flowed. And I was obviously in a state of being at that particular time in my life, and everything around, at least the seed of the song flowed. Then you have to obviously work on it and things like that. But for me, the creative process is कि अगर कोई seed है, कोई भी seed में magic है, तो then if it takes me like even 5 years, 10 years, 50 years for that to chase that is where my excitement lies, in nothing else. So Chor was like that. Right. You get the sense that this is a sort of cultural synthesis of all, like you have absorbed from the culture, from your own experiences. When I hear Chor, it also reminds me a little bit of, say, Krishna, or, I mean, there are this lot of imagery sort of associated with it. Was that how you also visualized it? I won't be able to tell you how I visualized it. There's a reason for it. There is a reason for it that जो मेरे को poetry अच्छी लगी है, and at the cost of sounding arrogant in a small space, I think I'm going to do like really good things in my life. अभी मैं पैदा हो रहा हूँ, तो No, yeah, inshallah. I believe it. I believed it like from the very first night. Then when I didn't even know a single note to play music. Music released was after 8 years of that, but I believe in my heart that अभी शुरू हूँ यार मैं, अभी it's just the beginning of just. So I'm saying कि मेरे लिए it's very important कि मैं जो गाने हैं उसको ना meaning अपना attribute ना करूँ, because the poetry that I have lived and I feel stays for a really long time, like say the poetry of Kabir, or the poetry of Guru Nanak, or even like, not to compare any, Tagore, or even like Bob Dylan or Leonard Cohen, or the poetry, at least the songwriting
that I'm not comparing anybody, so nobody should come Guru Nanak ko isse matlab no comparison. I'm just saying. No, we understand. Yeah. I'm just telling you because eventually it's all words. Even if it's bhakti or it's like modern songwriting, it's words. So for me, it's like things that stay alive for a long period of time. It's very important for the artist not to ascribe their meaning to that, because the audience have to, or the listener has to give their own interpretation or their meaning. Even say a text like Bhagavad Gita, there is no interpretation. There are a billion interpretations of that, right? There is no, Krishna did not give his interpretation, or he was just stating, or whoever wrote the text. Like the text flows, then the interpretations follow, and the interpretations or just the absorbing of that poetry makes it alive. That is also a very integral part of making something alive. So I want the poems and the songs that I write to stay alive. Yeah, and also, I mean, it's for the. I've heard that you said that in interviews, etc. That you want the listener to also, kind of listen to the music and ascribe their feelings and their. It appears to them. I mean, it kind of they experience it according to their mood at that time. That is true for me also. कि मेरे साथ जब मैंने चोर लिखा था, it meant a different thing. When I was doing the music production of that, it meant a different thing. Then when I was singing it, it meant a different thing. Now it means a different thing to me. Right. So for me also, the meaning of the song evolves when how I am evolving. There's no, it's like a living thing. Yeah. और कोई चीज जीवित है. Yeah. तो उसमें अपनी एक लाइफ है, अपनी एक धड़कन है, अपना एक सब कुछ है. Yeah, absolutely, that makes so much sense. When I listen to Tagore also, you have said that, Tagore is somebody that, whose work you sure, absolutely. Like feel about, right? Like something that, so... There's this one poem in Tagore's book called The Gardener. The last poem of that is, hey, who are you, my listener, reading this 100 years from now? Right, yeah. Matlab, I have forgotten the exact text of that. बट उसका एसेंस था कि 100 साल बाद जो रीडर है जो मेरे को पढ़ रहा है, मैं यहाँ की जो खुशबुएं हैं इस गुलदस्ते की, वो मैं आपके पास भेज रहा हूँ. एंड व्हेन आई रेड दैट आई लिटरली गॉट गूज़बम्प्स. आई वाज लाइक, I am having this one-on-one interaction with this guy from 1890, and we are in this moment together, and it was so real. And for a poet to write something like that, and obviously this is a literal thing because he is talking about 100 years from now, but even other poems that he's written, there is so much magic to his writing that I feel like I've said before कि मेरे लिए magic is something that really excites me. So I feel a lot of magic in his writing. Yeah. Let's talk a little bit about your new single, Unse Jaake Keh Do. I don't know if people here have heard the song. Would you like to play and like maybe hum a little bit? Sure, I can play it for sure. सुनना चाहते हो बेंगलुरु? हाँ को क्या बोलते हैं इधर? हाँ को क्या बोलते हैं? सेरी, सेरी और हाँ. Okay. No, I personally am a big fan of like I obviously don't know much about the language because I've not stayed here, but जो southern languages का जो एक texture है ना, वो मेरे को बहुत ही attract करता है because it's so artistic, like the way the script is very fascinating. So सुनना चाहते हो? बोलो हाँ, बोलो हाँ. Okay. Check. See,
आप लोगों को ना, द थिंग इज दैट वी आर इन दिस टुगेदर. So I am not performing for you guys. You guys are also performing. Not for me. Like we are performing for each other, and that is how like the experience goes. So आप just absorb, clap, whatever. But let's do it together. तो करेंगे? बोलो हाँ. अच्छा. उनसे जाके कह दो इस दिल को इस्तेमाल ना करें. लेटे जिस रेत पे है उससे ही दीवार ना भरे. दिल बिखर बिखर के फिर संभलने वाला है. रात ढल चुकी सवेरा आने वाला है. हम तो खुद को फिर पसंद करने हैं लगे. उनसे जाके कह दो इस दिन को फिर से रात ना करें. रह गए निशान जो हैं उनको फिर से घाव ना करें. हाँ उनसे जाके कह दो इस दिल को इस्तेमाल ना करें. हाँ बातें करता हूँ मैं अब ना उनके बारे में, ताकि उनकी यादें दिल में आती ना रहे. हाँ रातें भरता हूँ मैं. Hello. उनसे जाके कह दो इस दिल को इस्तेमाल ना करें. थैंक यू. अब वो ये माइक जाएगा आएगा क्या हो रहा है? ये भी दे दो. अब मैं खड़ा ही हुआ हूं तो अब ये हो ही गया तो मैं चोर भी गाई देता हूँ. पर अब माइक का क्या होगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बोलूंगा कि मैं इंदिरा नगर में आया था,
गाने के बीच में लाइट जा रही थी, फिर मुझे खुद लाइट बनना पड़ा। मेरे अंदर एक रोशनी है, वो हर रोशनी से ज्यादा चमकती है, क्योंकि इंदिरा नगर में बेंगलुरु पोएट्री फेस्टिवल में मैं आया था। वहां पे 2 बार गाने के बीच में लाइट चली गई। बोलो, लाइट चली गई तो फिर मैं लाइट बन गया। बोलो, मैं लाइट। बोलो, मैं, क्योंकि मैं ही लाइट हूं। गाना है, गाने का नाम है चोर, मेरा नाम है जोश। क्योंकि अगर हम पोएट्री फेस्टिवल में हैं तो मैं 1-2 लाइनें आपको सुनाता हूं। बोलो, इरशाद। ऑल्दो मेरे को आज तक नहीं पता चला इरशाद बोलते क्यों है, क्योंकि आई हैव नो आइडिया व्हाट इरशाद मीन्स। लेकिन कि अगर मेरी तरन्नुम में तेरा नजराना नहीं, तरन्नुम मीन्स अ ट्यून, अ कॉम्पोजिशन, अ मेलोडी, कि अगर मेरी तरन्नुम में तेरा नजराना नहीं तो हमने किया भी तो किया क्या। कि अगर मेरे लिखे हर शब्द से, कि अगर मेरे लिखे हर शब्द से तेरी रूह की महक आई नहीं तो हमने किया भी तो किया क्या। अगर बादलों को, कि अगर बादलों को तुझ पर लिखा हर गीत सुनाकर रुलाया नहीं तो हमने किया भी तो किया क्या। अगर मेरी सांस को, कि अगर मेरी सांस को तेरे एहसास का मुकम्मल हिस्सा बनाया नहीं तो हमने किया भी तो किया क्या। गाना है, गाने का नाम है चोर, मेरा नाम है जोस्त। कल कल रात, कल रात आया मेरे घर। आपको आता है तो आपको मेरे साथ गाना पड़ेगा शुरू से ही। कल रात आया मेरे घर एक चोर आके बोला, दे दे मुझे जो भी तेरा है। मैंने बोला, मेरा नाम भी ले जा, मेरा काम भी ले जा, मेरा राम भी ले जा, मेरा श्याम भी ले जा। मेरा नाम भी ले जा, मेरा काम भी ले जा, मेरा राम भी ले जा, मेरा श्याम भी ले जा। कल रात आया मेरे घर एक चोर आके बोला, दे दे मुझे जो भी तेरा है। मैंने बोला, मेरी जीत भी ले जा, मेरी हार भी ले जा, मेरा डर भी ले जा, मेरा घर भी ले जा, मेरे ख्वाब भी ले जा, मेरे राज भी ले जा, मेरा गम भी ले जा, हर जख्म भी ले जा, मेरी जात भी ले जा, औकात भी ले जा, मेरी बात भी ले जा, हालात भी ले जा। ले जा मेरा
जो भी दिखे जो ना दिखे वो भी ले जा कल रात। मेरे साथ जोर से एक जो और जोर से आके बोला दे दे मुझे जो भी तेरा है। मैंने बोला हाँ 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 हाँ। मेरा नाम भी ले जा मेरा काम मेरा राम मेरा शाम भी ले जा मेरी जीत भी ले जा मेरी हार भी ले जा मेरा डर भी ले जा मेरा घर भी ले जा मेरी जात भी ले जा औकात भी ले जा मेरी बात भी ले जा हालात भी ले जा। तो ये लास्ट लाइन आप सबको मेरे साथ गानी है और जोर से गानी है कि मेरा नाम भी ले जा मेरा काम भी ले जा मेरा राम भी ले जा मेरा शाम भी ले जा। और ऐसे गाएंगे कि आपकी लाइफ में जिस भी चीजों ने आपको जकड़ा हुआ है ना, whatever is keeping you captive, whatever it may be, whatever, इस moment, we are all in this together, 100-200 जितने भी लोग हैं, हम लोग सब एक इस moment पर we are one। इस moment पे आपको जिस भी चीज ने आपकी लाइफ में आपको जकड़ा हुआ है ना, आप इस moment पे फ्री हो रहे हो उस चीज से। उस एनर्जी के साथ गाएंगे और गाओ ऐसे कि हम इंदिरा नगर सभा में नहीं बैठे, हम वेम्बली स्टेडियम में बैठे हैं। तो गाओगे आप वो एनर्जी के साथ? Every person should sound like they are having the voices of 30 people। तो गाओगे? आप गाओगे? बोलो हाँ। Let's do it। जोर से। मेरा नाम, मेरा काम, मेरा राम, मेरा एक और बार। मेरा नाम जोर से, मेरा काम, मेरा राम भी ले जा मेरा शाम भी ले जा। कर दे मुझे आजाद, कर दे मुझे आजाद, आजाद, आजाद। कल रात आया मेरे घर एक चोर। थैंक यू, 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 थैंक यू। आप बैठ जाओ यार बस। वो क्या होता है ना, स्टैंडिंग ओवेशन में मैं भी ऑडियंस में बहुत बार रहा हूँ। होता क्या, 5 लोग खड़े होते हैं, फिर बाकियों को लगता है हम खड़े हों कि ना हो, फिर आधे होते हैं, फिर वो बाकी लोगों को वो हो जाता है, सोसाइटल कंपल्शन हो जाती है, तो वो फिर होना शुरू हो जाता है। तो इट्स ऑल गुड। आई अप्रिशिएट लाइक द फीलिंग। सो या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हो गया? नो आई एम गुड। तो आई थिंक वो जो कॉन्वर्जेशन हो गई, तो अब मैं कुछ बोल ही देता हूँ फिर, क्योंकि ऐसे अब व्हाट आई जेन्युइनली बिलीव इज कि हर स्टेज की ना एक वैल्यू है। लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ वैल्यू टू एवरी माइक। समटाइम्स पीपल गेट कॉट अप। मैं आपको एक अपना लाइफ का ना एक स्टोरी छोटी सी सुनाता हूँ कि ना, मैं दिस वाज इन 2019, राइट? आई हैड नॉट रिलीज्ड अ सिंगल सॉन्ग एंड आई न्यू दैट इट्स गोइंग टू टेक मी सम टाइम टू स्टार्ट रिलीजिंग म्यूजिक। मैं बॉम्बे में मुंबई में ओपन माइक कर रहा था, जाता था जस्ट टू लाइक बेटर माई क्राफ्ट। तो वहाँ पे ना एक कोई समटाइम्स देयर वाज एन ऑडियंस ऑफ 1, समटाइम्स देयर वाज एन ऑडियंस ऑफ 2 एंड तो एक बार ऐसे ना मेरे को एक चीज़ लगती है कि लोग ना आके वो बोलते, जैसे मेरे को बहुत सिंगर्स आके बोलते थे वहाँ पर, जो अपकमिंग म्यूजिशियंस होते थे, वो बोलते यार, मैं उनके ना आई वेरी लाइक टू अप्रिशिएट पीपल। तो मैं उनको बोलता है यार कि तू कितना सही है यार। तो लोग बोलते हैं यार मैं कहाँ सही हूँ, तू बहुत सही है। मैंने बोला मैं तो हूँ ही मैं तो हूँ ही यार। मैं अपनी मैं अपनी वैलिडेशन नहीं मांग रहा। व्हाट आई एम सेइंग इज कि पीपल
somehow I've realized कि people, it's very strange to me that people don't accept their appreciation. मतलब आपने तारीफें करो यार अपने आप, बोलो यार कि वाह क्या पैदा हो गया हूँ मैं, मतलब आपको लगता है कि यार मैं जो पैदा हुआ हूँ उसमें मजा आ गया, तो व्हाट आई वुड वांट टू से इज कि यार अप्रिशिएट योरसेल्फ. क्योंकि मैं तो कई बार धरती को बोलता हूँ कि वाह यार कि हाउ ब्लेस्ड आर यू कि मैं तुम्हारी जगह पे जन्म लिया मैंने. फिर धरती को मैं सुनता हूँ, धरती बोलती है थैंक यू. तो आई एम सेइंग कि call it delusion, call it whatever, but I have fun doing that. I have fun staying in this world. I have fun staying in this existence. So I am saying कि मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा, but I am saying कि मजे करो यार, appreciate yourself और पार्टी करो. और दूसरी चीज ये है, मैं एक चीज और बोल रहा था कि हर माइक की वैल्यू है. तो मैं एक ओपन माइक पे गया था, वहां पे there was nobody. तो मैंने ऑर्गेनाइजर ने बोला तू गाएगा, एक बंदा है बस ऑडियंस में. दैट वाज माय फर्स्ट टिकेटेड शो. तो 200 रुपीज की वहां पे वो थी टिकट. देयर वाज वन पर्सन. तो आई टोल्ड हिम कि अगर यहाँ पे कोई भी नहीं होगा ना, तो भी मैं हवाओं में बैठे परिंदों के लिए गाऊंगा, क्योंकि मैं गाने के लिए पैदा हुआ हूं. पर मैं गाऊंगा. And the interesting thing is, next day, like a major Bollywood superstar, he called me to open his show, and the next day I was performing for 6,000 people. The next day or maybe 2-3 days after that. So what I'm saying is कि यार कि मजे करो यार कि मैं ही हूँ भाई. Like so all I want to say is that I wish you guys a lot of abundance. I wish you guys कि यार आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आबादी आए, बहुत ज़्यादा prosperity आए. Like all your worries leave you, and just like good, positive light, and just you feel relaxed and you feel good about life, and you feel good about your family, your loved ones, your enemies, yourself. You just start feeling good about everything. So that is my deepest wish to all of you, and it's an honor to be in Bengaluru. So thank you for having me, and आपकी लाइफ में आबादी आए, खुशियाँ आए, प्यार आए और मज़े ही आ जाए बस. Thank you. Thank you. Thank you. उदय पूर्व धन्यवाद गणु.